Hello students, today we are going to discuss different kinds of translation technologies. So let us first understand what is translation technology. Translation technology is the use of computer software in the translation process. ट्रांसलेशन प्रोसेस में हम जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं उसको हम ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. फॉर एग्जांपल electronic dictionaries, glossaries, online bilingual text, translation memories, and even voice to text technologies are translation technologies. So now let us discuss why translation technology is required. When translation is done manually by translators, they have to consult dictionaries using their best judgment. This process requires a lot of time and expertise. Meaning, जब translators जो है source language से target language में एक text को translate कर रहे हैं, then they would require a lot of knowledge. Knowledge in terms of vocabulary, in terms of cultural context, in terms of sentence structuring. इसलिए जब भी ट्रांसलेशन किया जाता है बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे जो है टेक्स्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं. किस टाइप के टेक्स्ट? डिक्शनरी, ग्रामर रूल्स, पैरेलल टेक्स्ट, उसी टाइप के जो है अगर कोई और टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसीलिए ट्रांसलेशन का प्रोसेस तो इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल कि एक लैंग्वेज से आपने दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो योर एनर्जी. ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ही टाइम एंड माइंड इंटेंसिव प्रोसेस है. इसलिए जो है हमें ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है. As is the case of most work aided by technology, translation technology tools can increase productivity, accuracy, and overall effectiveness. तो इसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से हमारी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है, टाइम कम हो जाता है और जो एक्यूरेसी है वो भी उस ट्रांसलेशन की इंक्रीज होती है. So there are two major types of translation technologies. First is computer assisted technology and the other is machine translation. What is computer assisted translation? Computer assisted translation is the utilization of computer hardware and software by human translators as a means to aid and bolster the translation process. जब हम ट्रांसलेशन करने में कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन. What is important about computer assisted translation is that human being is the primary agent in computer assisted translation. सारा जो काम है ट्रांसलेशन का वो कौन कर रहा है? It is done by a translator और उसको हेल्प कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स. On the other hand, machine translation is a process of translating text from one language to another in real time using computer software and without any human involvement. Machine translation is done entirely by a computer software. जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसलेशन का उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है. आपको सिर्फ जो है टेक्स्ट सोर्स लैंग्वेज में एंटर करना होता है. सॉफ्टवेयर में आप सेटिंग कर दोगे कि व्हाट इज़ योर टारगेट लैंग्वेज और जो है वो प्रोसेस होके अपने आप जो है टेक्स्ट ट्रांसलेट होके आपके सामने आ जाएगा. So what is the basic difference between computer assisted translation and machine translation is that
Computer assisted translation is done through human agency. इंसान ही जो ट्रांसलेटर है वही सारा काम कर रहा है, कुछ हेल्प जो है उसको सॉफ्टवेयर्स कर रहे हैं. On the other hand, machine translation is done without any kind of human intervention. बिना किसी ह्यूमन हेल्प के जो है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? मशीन ट्रांसलेशन. So this is the difference between computer assisted translation and machine translation. Let us discuss computer assisted translation in detail now. Computer assisted translation tools are software applications created to support translators in their daily work. Most commercial computer assisted or aided translation tools appeared during 1990s. It works by using a translation memory. What is translation memory? For example, अगर आप कोई text जो है ट्रांसलेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एंड इन दैट टेक्स्ट देयर इज अ सेंटेंस. जो हिंदी का आपका टेक्स्ट है उसमें सेंटेंस है मेरा नाम अनन्या है. Now this will be translated in English by you as my name is Ananya. So whenever this software encounters a similar sentence, it will automatically give you the suggestion regarding the translation. Similarly, जो छोटे छोटे phrases होते हैं, अगर वो किसी text में बार बार repeat हो रहे हैं, तो जब आप first time उसको translate करोगे, वो जो है सॉफ्टवेयर की मेमोरी में सेव हो जाएगा, और जब भी वो फ्रेज दोबारा आएगा तो अपने आप से आपको वो सजेस्ट कर देगा दैट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस फ्रेज शुड बी दिस. So this saves the time and energy of the translator, and this is called translation memory. क्योंकि जो आप translations कर रहे हो वो जो है सॉफ्टवेयर की मेमोरी में सेव होता जा रहा है, और जब भी सिमिलर जो है वो ट्रांसलेशन देखेगा, सेंटेंस देखेगा, तो जो है सॉफ्टवेयर अपने आप से आपको प्रॉम्प्ट कर देगा दैट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस शुड बी दिस. CAT tools come in a variety of different categories, including terminology databases, translation memory, and language search engines. Some examples of CAT tools are Trados, WordFast, and Etrel Deja Vu. Now you can check out one of these translation tools, then you will understand how these tools work. It's time to discuss machine translation in detail now. Machine translation started in the 1930s as mechanical multilingual dictionaries. Machine translation is an automated system that allows for the production of translated content without human intervention. So it is an automatic process. आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है. You just have to enter the command and then you will get the desired result. Machine translation differs from CAT tools in that it doesn't rely on human input but produces translations entirely on its own. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, what is the difference between machine translation and CAT tools is that in CAT tools, translation is done through translators, that is human beings. In machine translation, translation is done entirely through softwares without any kind of human intervention. बिना किसी ह्यूमन एजेंसी के, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो है मशीन ट्रांसलेशन किया जाता है. Perhaps one of the most exciting aspects of using such technology is its learning capabilities. Now this is something very interesting. जो आपकी मशीन ट्रांसलेशन होता है, इट इज़ अ प्रोसेस विच कीप्स ऑन इवॉल्विंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग. जैसे कि हम एक ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें वो प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, कुछ नए वर्ड्स भी हम सीखते हैं, है ना. तो सिमिलरली मशीन ट्रांसलेशन में व्हेन यू आर
translating a text, all the new information that was encountered by the software in that particular process will be saved, और वो जो नई चीज़ें सीखेगा फिर वो नेक्स्ट टाइम ट्रांसलेशन में उसको यूज़ करेगा. तो जैसे जैसे जो है मशीन ट्रांसलेशन आप करते रहोगे किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो इम्प्रूव होता रहेगा, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग. नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता. इसीलिए देर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजीज also. So what are the major drawbacks? Translation technologies undergo a process of word-for-word mechanical substitution. Word-for-word translation can affect the accuracy of the overall text. As such, utilizing such technologies can affect the quality of the final text, as there is no recognition of linguistic elements such as phrases, idioms and slang. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इन आवर लास्ट वीडियो कि ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड जब किया जाता है then it might not be accurate for language which is figurative or idiomatic. जब स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है तो ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी अच्छा हो जाता है, जैसे कि लीगल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स के लिए. बट फॉर लिटरेरी टेक्स्ट वेयर फिगरेटिव, जहाँ पे कि फिगरेटिव और इडियोमैटिक जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसके लिए जो है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज़ नॉट recommended. फॉर एग्जाम्पल एक हम बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट लेते हैं हिंदी में, मोहन अकल से पैदल है ना. दिस इज एन इडियम. अकल से पैदल होना मतलब समवन हु इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट. तो अब जो है अगर आप इसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करोगे देन मोहन विल रिमेन मोहन, अकल माइट बी माइंड, पैदल on foot. So if you combine all these words into a statement, Mohan's mind is on foot. Now this does not make any sense, and this is not what the original speaker was trying to convey, है ना. मोहन अकल से पैदल है, अगर ये किसी ने कहा है तो डेफिनेटली अगर आप इसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हो तो वो ट्रांसलेशन गलत ही होगा. बिकॉज जो इडियम्स होती हैं, मुहावरे होते हैं, उनमें क्या होता है, लिटरल मीनिंग अलग होता है और सिंबॉलिक मीनिंग अलग होता है. तो अगर आप उस कल्चर को अच्छे से जानते हो, उस लैंग्वेज को अच्छे से जानते हो, तभी आप फिगरेटिव या फिर इडियोमैटिक लैंग्वेज को, जहाँ पे कि मुहावरे लोकोक्ति यूज़ किए गए हैं, उनको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हो. So translation technologies might not be suitable for texts which are not straightforward. Plus, not all words in one language have equivalent words in another, with many words having more than one meaning. As a result, okay, so we also know that language is culture specific. तो बहुत सारे वर्ड्स हर लैंग्वेज में होते हैं जिनका हो सकता है कोई भी इक्विवेलेंट दूसरी लैंग्वेज में ना हो. इक्विवेलेंट मतलब वर्ड जिसका कि सेम मीनिंग है. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल. हम जो है अगर हिंदी में लिख रहे हैं ताक पर दिया जल रहा है, then there is no equivalent word for tak in English. There is no equivalent word for diya in English. So translation in such context becomes very difficult for a software to undertake. As a result, it is important to keep in mind that when using such a tool, human translators should always post-edit any work undertaken by machine translation or through translation technologies. तो अगर आप translation technology use करके कोई translation कर रहे हो तो it is recommended
कि आप जो है एक बार उस ट्रांसलेशन को अपने आप से चेक कर लो, जो भी ट्रांसलेटर है वो उसको अच्छे से चेक कर ले, बिकॉज देयर माइट बी सम एरर्स बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स. Therefore, different kinds of translation technologies may ease the translation process, but they can, as of now, not replace the human intellect. I hope you understood whatever was discussed in the video. Keep tuned for many such more videos and don't forget to like and subscribe. Thank you. Have a good day.